Assalamu alaikum and good evening, everyone. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. So, in the last lecture, we have seen uh, almost all the parts, right? Hmm. Today, we are going to look at optical activity and chiral carbon and chirality. So, please write the heading chiral carbon. So, the definition is very easy and it is also very easy to identify a chiral carbon. Please write carbon atom that has 4 different groups attached to it is called chiral carbon. ठीक है? The molecule that has chiral carbon is called chiral molecule. It's called chiral molecule. ठीक है? Write a question. Identify the chiral molecule in following. A structure and this is the B structure. इन दोनों में बताना है कौन सा chiral. ठीक है? I hope you have written the statement, the theory part, chiral carbon को identify करने के लिए. लिखिए. ठीक है? ए और बी ऐसे समझ लीजिए. फर्स्ट ऑप्शन मतलब पहला का ए और ये दूसरा का ए हो गया और दूसरा का बी हो गया. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. AB option is available in the first question also and second question also. Got it? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है? No confusion ना? ठीक है. Right. Third question. चलिए इतना ही 3 कीजिए जरा. Should I do any one of them? Tell me guys. Yes, sir. अच्छा ठीक है. See, what you need to identify कि कौन से मॉलिक्यूल में chiral कार्बन है ना. chiral मॉलिक्यूल कौन सा होगा? The molecule which is having a chiral carbon. So we will identify in each carbon क्या क्या group attached है ना. What are the groups attached on each carbon atom? Fine.
चलिए एक सेकेंड, लेट अस सी द फर्स्ट कार्बन, ठीक है। तो इस कार्बन में अगर आप देखें, इस कार्बन आइटम इट हैज 3 हाइड्रोजन्स, करेक्ट है गाइस? इसमें प्लीज टेल मी, है ना? यस सर। एंड एनी यस सर नो सर, है ना? आप लोग अगर, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग नाउ, जस्ट ट्राई टू आंसर मी, yes or no, please, I need answer from everyone. Yes, sir. यस Make sense? ठीक है। So obviously you can see that you have hydrogen, hydrogen, these are same, right? All four when they are different, तब हम बोलेंगे chiral carbon है। So obviously all four are not different. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. यस सर। Yes. What is present here in this carbon? क्या क्या है यहाँ? सर 2 कार्बन्स एंड 2 हाइड्रोजन्स। नहीं, जो नहीं, जो नहीं दिख रहा वो बताइए, जो दिख रहा है उसको छोड़ दीजिए। Here we have 2 hydrogens, right? यस सर। So these 2 hydrogens are there. That means it is not chiral. Make sense? यस सर। Yes. Similarly here, tell me how many hydrogens? 2 hydrogens. 2 2 हाइड्रोजन्स सर। hydrogens. So here also this is also not chiral. What about this one? How many hydrogens? 2 hydrogens. 2 hydrogens. That means this is also not chiral. Now in this, अब ये obviously this is going to be chiral. अगर हो भी सकता नहीं हो सकता देखते हैं. Now what about the first carbon atom? What do we have here? How many hydrogens? 3 hydrogens. What about this carbon atom? How many hydrogens? 1। है ना? Because 3 bonds है तो एक hydrogen होगा यहाँ पे. So now here you can see that what are the bonds that this carbon has? It has a hydrogen bond. It has a chlorine bond. It has a bond with CH3. It has a bond with C2H5. So all of these are what different. Make sense? Yes or no? Please tell me. कोई भी यहाँ पे सेम नहीं है. That means this carbon atom is chiral carbon. और chiral carbon को ऐसे एक स्टार मार्क से शो किया जाता है, ठीक है? So this is the chiral carbon here. That's why this molecule will be chiral. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. यस सर। Try for the second one and third one. A और B में बताइएगा कौन सा chiral है. Now you can write this down. पहला वाला लिख लीजिए, तरह समझ समझ के लिखिएगा बस, हाँ? That's the only thing. Hmm. You have to show me, Krishna Priya, which carbon is chiral. Okay, sir. I'll send that again then. Hmm. Just put a star mark with whatever carbon you think is chiral.
Yes, Krishna Priya, makes sense. Yes, Yusuf, Mir, and Arsalan, I'm waiting for you guys. Yes, sir. Just 1 minute. Yusuf, you have sent. Yeah, very good. Arsalan and Mir waiting for you guys. Sir, Mm-hmm. Yes, Yusuf, is tell this me. is this the last topic of this chapter? Yep, yep. Okay, sir. Arsalan. Yeah, correct. It's fine. थोड़ा हैंडराइटिंग सुधारने की कोशिश कीजिए अरसलान. Yes, sir. Okay, ठीक है, fine. So these are chiral molecules, and these chiral molecules, they have a particular property. chiral molecules होते हैं, कुछ property होती है. So they are optically active compounds. You see here, guys. Right, the topic optical activity. Right, is right. The compounds that rotate plane polarized light in clockwise or anti-clockwise direction are called optically active compounds. So basically plane polarized क्या होता है? When you have a light, तो light की जो wave होती है, it can oscillate in every direction.
और बेसिकली जो व्हाइट लाइट होता है उसमें यू हैव लाइट और द फ्रीक्वेंसी विच हैव वेव्स इन एवरी डायरेक्शन। और जैसे चश्मा पहनते हो तो आप कैसे, मतलब सारी की सारी चीजें एक पर्टिकुलर लेंस के थ्रू दिखती है और मतलब एक पर्टिकुलर कलर में दिखता है। सो इट इज ऑल्सो अ पोलराइजर, द लेंस दैट यू वेयर ना। लेंस मतलब वो सन ग्लासेस वाला, ठीक है। सो व्हेन यू वेयर द सन ग्लासेस, so it is also a kind of a polarizer. It polarizes certain lights. वो कुछ लाइट को एंटर करने देता है और कुछ लाइट को एंटर करने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका ब्राइट लाइट्स होते हैं ना, येलो हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, तो उन सबको वो कैंसिल कर देता है एंड यू कैन ओनली सी डार्क कलर्स, ठीक है। सो अब डार्क कलर देखने का मतलब यू हैव सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू, तो दैट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि एक प्लेन में लाइट होगा। नाउ व्हेन दिस पासेस थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ये आपके पास कंपाउंड है लिक्विड फॉर्म में। एंड व्हाट कैन हैपन, इट कैन रोटेट दिस पर्टिकुलर प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू अ सर्टेन डायरेक्शन, ठीक है, इनटू अ सर्टेन डायरेक्शन। दिस कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नाउ if the compound rotates it if the compound rotates the plane polarized light in the clockwise direction, यानी कि राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है अगर, तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा है तो उसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी, ठीक है। सो यू कैन राइट इट हियर, प्लीज राइट, if the compound rotates the plane polarized light in clockwise direction, it is said to be dextro rotatory or plus form और the D form। सिमिलरली अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज के लिए, in anti-clockwise direction, then it is said to be levorotatory or minus form or the L form। Done? Now we have seen chiral molecule, how to identify a chiral molecule, ठीक है। Now if I want to write the definition of chiral molecule, then it will be something like this: chiral molecules क्या होते हैं? The molecule which is not superimposable on its mirror image। ठीक है, on its mirror image। तो अब देखिए, एक कायरल मॉलिक्यूल होगा और उसका मिरर इमेज होगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं हो पाएंगे। एंड दिस दिस पेयर दैट वी हैव ना, कायरल मॉलिक्यूल और उसका
मिरर इमेज, इनको इनैंशियोमर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपको याद रखनी, इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो इनमें क्या होता है, इसमें सब कुछ सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, द एटम्स व्हिच आर कनेक्टेड टू अ कार्बन एटम दैट विल आल्सो बी सेम। ठीक है, चार के चार, मतलब फॉर एग्जांपल यू हैव कार्बन, ठीक है, तो ये आपका मिरर इमेज हो गया। लेट अस सपोज यू हैव ए, बी, सी एंड डी, है ना? तो ए, बी, सी एंड डी। नाउ बोथ ऑफ दीज आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन टू ईच अदर। एंड जो दूसरी चीज है, दैट फॉर एग्जाम्पल इफ दिस रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट 50 डिग्री राइटवर्ड्स, तो ये 50 डिग्री लेफ्ट में रोटेट करेगा। सो वेयर डू दे डिफर? दे ओनली डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, दीज आर नॉट सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। दे रोटेट the plane polarized light in opposite direction with same magnitude. With same magnitude. एक अगर 50 डिग्री राइट तो दूसरा 50 डिग्री लेफ्ट, एंड दैट इज वाई द मिक्सचर ऑफ इनहांस, जो अगर आपके पास इक्विमोलर मिक्सचर होगा, किसका? रेस इक्विमोलर मिक्सचर होगा डी और एल फॉर्म का, यानी इनैंशियोमर्स का, देन दैट सोल्यूशन इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये क्या कर रहा है, 50 डिग्री राइट में रोटेट कर रहा है, एंड दिस इज रोटेटिंग 50 डिग्री इन द लेफ्ट। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें विद द सेम क्वांटिटी, अगर हमने 50-50% में इन दोनों को मिला दें, तो क्या हो जाएगा? द सोल्यूशन जो होगा ना, तो सोल्यूशन से जो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेगा, तो 50 डिग्री राइट ये रोटेट कर देगा, 50 डिग्री लेफ्ट ये रोटेट करेगा, तो एट द एंड नेट रोटेशन विल बी जीरो। मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes. ठीक है, तो एक चीज हमने लिखाई थी, रेसमिक मिक्सचर, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम SN1 में रेसमिक मिक्सचर मिलता है, एंड रेसमिक मिक्सचर इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स, डी और एल फॉर्म का। ठीक है, सो प्लीज राइट हियर नेक्स्ट पॉइंट, इक्विमोलर mixture of D and L form, that is enantiomers, um, that is enantiomers, do not, are optically inactive, are optically inactive as the rotation due to one enantiomer is cancelled by the rotation due to, is cancelled by the rotation due to other enantiomer.
Then guys, please raise your hand once you're done. So this is it for haloalkane and halorine. ठीक है. अब I'm going to send you guys a video. ठीक है. All of you guys are group में तो आप लोग हैं ही, but still wait a second. I'm going to send you guys a video that is for organic conversions. ठीक है. सर को भेज दिया हमने. To send it for Yusuf and Krishna Priya and Mir. Mir, please message me. I don't have your number, I guess. Please message me. I will send you the link for the video for conversions. ठीक है. तो conversion के लिए सबसे पहली चीज, there are few things that you require for conversion. Organic conversion अगर आपको करना है, then there are few things that you should know. क्या है? If you have been given the IUPAC name, then you should be able to draw the structure. ठीक है. एक तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, अगर IUPAC नेम दिया हुआ तो स्ट्रक्चर कैसे आएगा. दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता रहनी चाहिए, इफ यू वांट टू डू कन्वर्जन्स, देन कन्वर्जन में एक चीज आपको जो जरूरत पड़ेगी अबाउट द रिएजेंट्स, कि कौन से रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है? फॉर हालोकेन हालोरीन आपको MOP ऑफ हालोएल्केन एंड हालोअरीन, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हालोएल्केन एंड हालोरीन. सो दीज थिंग्स शुड बी प्रेजेंट. ये आपके पास तो दिमाग में ही रहना चाहिए, तो आपको आना चाहिए, है ना. और ये आप क्या कर सकते हैं, 2 शीट बना लीजिए. एक शीट में ट्राई टू condense all the method of preparation, and in another sheet try to condense all the chemical properties. There are a few more sheets that you have to make. ये तो सारे चैप्टर का आपको बनेगा, जितने भी चैप्टर्स आप करेंगे ना, हालोअल्केन हालोअरीन क्या, अपने अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, सबका आपके पास एक पेज होना चाहिए जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहे इन अ सिंगल पेज, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन अ सिंगल पेज. नाउ दिस कैन हैव अ फ्यू वर्जन्स. आपने पहली बार मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाया, सिंगल पेज में नहीं आया, 2 पेज में आया, तो आप उसको फिर से और ट्राई टू कंडेंस इट सो दैट इट इज इन सिंगल पेज. और आपके लिए रिवीजन यही है. बात समझ में आ रही है एवरीवन? यस नो प्लीज टेल मी. यस सर. आपको Yes, sir. रिवीजन पढ़ पढ़ के बिल्कुल नहीं करना है. ठीक है. आप नोट्स पढ़ रहे हैं, वो आप खुद के धोखा दे रहे हैं. भले आपको लग रहा हो कि आप पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है. फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा. आप जितनी मर्जी बिरयानी की रेसिपी पढ़ते रहिए, क्या आप बिरयानी बना पाएंगे? बताइए. सर. नहीं ना. आप रेसिपी को लेके किचन में जाइए, तब बनेगी बिरयानी, है ना. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल ऐसे ही है. आप नोट्स के साथ साथ आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए, एंड यू शुड बी डूइंग द प्रॉब्लम्स. या तो आप कंडेंस करें किसी चीज को, ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन इट, है ना. नोट्स तो आप दिमाग ऑफ करके ही पढ़ सकते हैं ना. हो सकता है कि नहीं ऐसा कि आप नोट्स पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग ऑफ है? मेक सेंस क्या कहना चाह रहे हैं? होता है ना आपके साथ, यस. है ना. 5 पैराग्राफ हो गए लेकिन पता ही नहीं क्या पढ़े. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज थिंग्स व्हाट यू शुड डू, अभी टाइम बहुत क्रूशियल है. आप इस चीज के ऊपर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि आप 5 पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, याद आया यार हम तो कुछ समझ ही नहीं रहे, दिमाग ऑन ही नहीं है मेरे. वो टाइम आप बिल्कुल नहीं वेस्ट कर सकते. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट टू कंडेंस इट, है ना. तो आपने पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा अल्कोहल्स का वाला पूरा. तो अल्कोहल्स को आपने मतलब समझा कि चलिए ठीक है, ROH है, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे. जितनी भी रिएजेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या बना रहे हैं, RX बना रहे हैं. ठीक है. तो ये एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने सारे रिएजेंट्स ऐसे लिख दिया, ऊपर से नीचे ऐसे इतने में, तो छोटा छोटा करके लिख दीजिए, सारे रिएजेंट्स आ जाएंगे. ठीक है. नाउ यू कैन डू इट लाइक दिस. इसके अलावा बहुत सारे आपके पास वेज हैं जिसकी तरह जिससे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट सिंगल रिएक्शन और उसमें सारे रिएजेंट्स लिख दिया. ठीक है.
आपके पास अल्कोहल हो गया, उसके बाद आपके पास क्या है, एल्कीन्स, सिंपल एल्कीन से क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीस शुड बी देयर इन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो हो गई बात रिएक्शंस की, जहां से आप व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव अ लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स, आपको रिएजेंट पता चल जाएंगे। अगर अल्कोहल से हमको हेलोअल्कीन जाना है तो क्या यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद यू विल मेक अ पेज, दिस विल बी फॉर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होगा। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सेपरेट दिस इन टू डिफरेंट सेक्शंस, एंड हियर यू विल राइट नेम रिएक्शन। यू विल राइट नंबर 1 हेलो अल्केन हेलोरीन वाला चैप्टर, ठीक है। नेम रिएक्शन का नाम लिख दीजिए, सैंडमेयर रिएक्शन पहला रिएक्शन, फिनकेलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है, एंड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो इस तरह से लिखिएगा, यू राइट सैंडमेयर रिएक्शन और यहाँ पे लिखिएगा एमओबी ब्रैकेट। दैट मींस इफ यू डोंट रिमेंबर द सैंडमेयर रिएक्शन, कहाँ जाके देखना पड़ेगा आपको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप जाके देखिए। समझ में आ रही है, सुनो प्लीज टेल मी गाइस, ठीक Yes, है। sir. सो इन दिस सिंगल पेज यू विल राइट जस्ट द नेम, आपको रिएक्शन नहीं लिखना है यहाँ पे। रिएक्शन के लिए या तो आपके दिमाग में नहीं, या और यू हैव टू रेफर बैक टू द मेथड ऑफ प्रिपरेशन पेज, केमिकल प्रॉपर्टीज पेज, ठीक है। हेलोल्किन हेलोरीन का कुछ आ जाएगा यहाँ तक, फिर उसके बाद अल्कोहल फेनोल ईथर्स का यहाँ पे। सो इन अ सिंगल शीट यू विल हैव ऑल द नेम रिएक्शन फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर। अब दूसरी चीज जो आपको करनी है ना, अनदर शीट विल बी फॉर, फिर से एक शीट लीजिएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा दो सेक्शन में, ठीक है। और इसका हेडिंग रहेगा वाई क्वेश्चंस, वाई, पहला क्वेश्चन वाई क्या आ सकता है, पहले क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाई द रिएक्शन ऑफ SOCl2 विद अल्कोहल प्रिफर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन हेलोरीन। यू विल राइट ओनली द क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखिएगा, आप सवाल लिखिएगा सिर्फ, आपके पास जवाब आपके दिमाग में होना चाहिए। वाई सवाल, वाई वाले क्वेश्चन जो है ना, आइदर यू हैव टू गो बैक एंड लुक एट द नोट्स, तो आप नोट्स में देखिए जाके, ठीक है, और आप सिर्फ सवाल लिखिएगा तो फर्स्ट, क्योंकि जब आप रिवाइज कर रहे होंगे ना बिफोर दी बोर्ड एग्जामिनेशन, तो आपको क्या करना है, सवाल पढ़िए जवाब दिमाग में, सवाल पढ़िए जवाब दिमाग में, तो आपको क्या साथ साथ टेस्ट हो जाएगा। आपने सवाल और जवाब जब साथ में लिख दिया ना, तो ब्रेन आपके साथ ट्रिक खेलेगा, अरे एक वर्ड देख लो, ठीक है। अब वो एक वर्ड दिखाने के लिए एग्जाम में तो कोई नहीं रहेगा ना, सो यू विल राइट ओनली द क्वेश्चंस। ये किसके लिए हो गया, वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए होगा। सो यू हैव टू मेक, ये दो शीट तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट है, केमिकल टेस्ट। आपने ये फिर से यहाँ पे ऐसे लाइन बना दीजिएगा, आपने हेलोअल्केन हेलोरीन पढ़ा, इसमें आपने देखा एक लुकास रिएजेंट है, ठीक है, उसका टेस्ट देख लीजिएगा, ठीक है। सो सिमिलरली अल्कोहल फिनॉल्स में ज्यादा टेस्ट है, फिर उसके बाद एल्डिहाइड में भी टेस्ट है, फिर इसमें भी टेस्ट है। तो यू राइट द टेस्ट और किसके डिस्टिंक्शन के लिए होता है, यूज्ड फॉर रिएजेंट एंड यूज्ड फॉर सम डिटेल्स अबाउट लुकास रिएजेंट, आप यहीं पे लिख लीजिएगा। राइट, सो दिस केमिकल टेस्ट विल बी आल्सो देयर, ये भी आपको बहुत काम देगा, बहुत, बिकॉज एक सवाल कहीं ना कहीं आ जाता है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या कीजिएगा, केमिकल टेस्ट यहाँ पे लिखिएगा। अब उसके बाद एक और शीट जो है, लास्ट शीट, इससे अब उतने सवाल नहीं आते, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट, कुछ स्पेसिफिक सवाल ही आ जाता है सर। देयर विल बी अ शीट फॉर मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म में सिर्फ आप लिख लीजिएगा ये रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म, छोटे छोटे इसमें, फिर दूसरा रिएक्शन, फिर उसका मैकेनिज्म, रिएक्शन फिर उसका मैकेनिज्म, ठीक है। देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म जो जनरली आते हैं एग्जाम्स में, जिसको मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, तो वही मैकेनिज्म सिर्फ आपको देखने, जैसे SN1 और SN2 मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली व्हेन यू गो टू अल्कोहल चैप्टर, तो वहां पे हाइड्रेशन ऑफ इथीन, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, देयर आर टू रिएक्शन जिसके मैकेनिज्म जनरली आते हैं, ठीक है। तो एक मैकेनिज्म के पास आपका शीट होगा ना, ये मैकेनिज्म का शीट दो पेज हो सकता है, ठीक है। बट मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आपके पास 4 चैप्टर्स हैं, हेलोल्कीन एंड हेलोरीन, अल्कोहल फेनॉल ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर के लिए 2 लगेगा, सो you'll have 1 2, और अमीन्स वाला चैप्टर, सो you'll have total 5 10 पेजेस। 10 ये हो गया, +1 फॉर नेम रिएक्शन 11, +1 फॉर वाई 12, +1 फॉर केमिकल टेस्ट, एंड +2 कर लीजिए आप। पेजेस की बात कर रहे हैं, शीट की भी बात नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शीट्स, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पेजेस। तो 10 और इधर कितने हो गए, 3 13 तो 15, 15 आप 16 मान लीजिए, सो यू विल हैव 8 शीट्स, 8 पन्नों में, एक पन्ने में 2 पेजेस होते हैं, तो 8 पन्नों में आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहनी चाहिए ना। अगर आपने इतना कर लिया ना, ये 8 शीट आपने बना लिए बस, समझ लिया, आपने 8 शीट बना लिए और कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ क्या किए, 8 शीट्स को बना लिया,
उसी में ही आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ और बचेगा ही। मोस्ट ऑफ, अब आप क्या कीजिए, अभी तो नहीं, पर पीवाईक्यू जब हम लोग करेंगे तब आपको नजर आएगा कि ये 8 शीट्स के अंदर ही आपके, 8 शीट्स है ना, हाँ 8 शीट्स के अंदर ही आपके पास सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, बट जो मेहनत है आपकी ना, वो इसको बनाने में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यू हैव टू पुट योर माइंड, और उसकी वजह से याद भी रहेगा आपको, है ना। आपको ये याद नहीं रहेगा कि अल्कोहल और SOCl2 से RX यूज करते हैं, आपको याद रहेगा कि नहीं, अल्कोहल से हम जब अल्कोहल से जब हम हेलो एल्केन बना रहे थे, तो एक बार शीट में हमने ऊपर रखा था अल्कोहल को, लेकिन शीट सही से बना नहीं था, फिर हमने उसको साइड में रखा था। तो दीज आर द, ये चीजें आपके साथ दिमाग में चिपक के रह जाएंगी। यू विल हैव टू वर्क अराउंड, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अरेंज करने में। ठीक है, सो ये जो बनाएंगे हम, आप अगर इसको बनाइएगा, तो फॉर गारंटी लास्ट ईयर का मेरे पास ये है कि जिन लोगों ने इस पे मेहनत की थी, उनके 90 प्लस आए थे केमिस्ट्री। आई एम नॉट सेइंग कि ये बना, नहीं बनाइएगा तो नहीं आएंगे, बट ये बना लीजिएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके पास 90 प्लस स्कोर रहे, 90। ठीक है, बिकॉज यू नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू अरेंज द डिफरेंट रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म और रिएजेंट्स को। तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं फिर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में, जो इनिशियल 3 चैप्टर्स है आपके पास, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, तो वहां पे भी फार्मूला शीट आप बना सकते हैं, ग्राफ्स आप देख सकते हैं। ठीक है, सो वंस योर माइंड गेट्स ट्रेन्ड फॉर मेकिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो फिर आपके दूसरे चैप्टर्स में भी आसानी होगी। ठीक है, चलिए। सो हमने रिकॉर्डिंग तो भेज दी है। मीर, आई हैव नॉट गॉट अ मैसेज फ्रॉम यू टिल नाउ। You please send me the message, then I will send you the link for the conversions. ठीक है, so conversions आप देखिएगा। so I have discussed all the conversions from NCERT, जो हैलोल्केन हैलोरीन में है, और हैलोल्केन हैलोरीन में ही बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो नेक्स्ट कन्वर्जन आएगा आपका अमीन्स में आएगा, जो थोड़ा सा ज्यादा है, बट हैलोल्केन हैलोरीन में सबसे ज्यादा कन्वर्जन है। और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि हाउ टू डू द कन्वर्जन इन जनरल, इन जनरल किस मेंटालिटी से आदमी को कन्वर्जन करना स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज जो है ना, आप अगर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में देखिएगा, तो जो सीक्वेंस है कन्वर्शंस का, उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, पहला वाला अगर इजी है, सेकंड वाला इट्स नॉट लाइक इट इज अ बिट टफ, इट्स वेरी टफ। ठीक है, तो इजी से वेरी टफ जाने में आप लोग को बहुत डिफिकल्ट, आई एम ऑल्सो अरेंज्ड इट इन अ वे कि वो धीरे धीरे लेवल बढ़ता है ना। तो इनिशियली यानी 1, 2, 3, 4, अब ये 2 और 3 में जो रिएक्शन यूज हुआ है, ये दोनों ही रिएक्शन फिर फोर्थ में यूज हो रहा है। तो 2 में इंडिविजुअल रिएक्शंस आ रहे हैं, एक एक स्टेप वाला। अब ये 2 और 3 को कंबाइन करके फोर्थ वाला सवाल। ठीक है, तो सवाल वही है, आई हैव जस्ट रीअरेंज देम इन अ वे दैट इट विल बी इजी इफ यू आर गोइंग टू रिवाइज इट आल्सो। ठीक है, चलिए। मीर ने मैसेज किया, अच्छा फाइन मीर। Now we are going to start alcohol, phenols and ethers. Alcohols, please write the heading. Alcohols, phenols and ethers. In alcohol, phenols and ethers, दो अल्कोहल और फिनॉल्स तो दे हैव सिमिलर OH OH होता है, ईथर में आपके पास OR ग्रुप होता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। So if you want to classify alcohol, there is simple classification. You have 1 degree alcohol. 1 degree alcohol में you will have CH2 which is attached with OH.
ठीक है, CH2 which is attached with OH, और ये कार्बन एटम इट इज कनेक्टेड टू फर्दर सम पर्टिकुलर कार्बन एटम. उसके बाद आपके पास है 2 डिग्री अल्कोहल. This 2 degree alcohol, this has CH, which is connected to OH, and this carbon atom has 2 different groups attached to it. उसके बाद obviously आपके पास है 3 degree alcohol. Now in 3 degree alcohol, this carbon atom it is connected with OH, and this carbon atom is connected to 3 different carbon atoms. Now another is, if you remember, allylic alcohol or allyl alcohol. So it's very simple. जैसा allyl आपके पास haloalkene में था, allylic halide था. So here also you will have पहले double bond connected to sp3 carbon atom. This sp3 carbon atom is connected to OH. So some examples would be something like this. OH. So this OH is connected to a carbon atom which is sp3, which is further connected to a double bond. So you can have this in cyclic ring also, like this. Another is benzylic. In benzylic, you have the benzene ring, which is denoted by pH. Then you have a sp3 carbon atom, and then you have the OH. So it will be benzene ring. With carbon atom and then OH. ठीक है. So this is on the basis of attachment. Then if I want to classify on the basis of the number of OH group attached, another classification could be, please see. One is monohydric. Monohydric means it contains only one OH group. Then आपके पास हो गया dihydric. Of dihydric, you can have trihydric. And then you have polyhydric. In monohydric, only one OH. Here you'll have two OH. यहाँ पे आपके पास 3 OH groups will be present. Here will be more than 3. Now अब कुछ एग्जांपल्स में इसमें मिक्स करके हम एग्जांपल देख रहे हैं. सो कुछ आपको एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव दिस, इट इज 2 carbon atoms and OH, so this is ethanol, which will be the IUPAC name, or it will be known as ethyl alcohol, which is a common name that is generally used, ethyl alcohol. And sometimes you can also see it in the form of ETOH, ethyl alcohol. Now, another example, one of the example of dihydric will be CH2 bonded to CH2, and both of these CH2 have OH. So you have to remember that this is glycol. Now these can be used in different types of reactions. है ना, glycol next आपके जो chapter carboxylic acid वाला उसमें आ सकता है. Then you have CH2, CH, CH2. All of these are bonded to OH. So this is an example of trihydric. This is known as glycerol.
Now, there are compounds which are known as cresols. Cresols are phenol with one CH3 group. Phenols with one CH3 group. So there are three different types of cresols. So obviously cresol will have OH because it is phenol with one CH3. तो एक CH3 ऑर्थो में हो सकता है, or you can have M cresol with CH3 in the meta position. So you can have OH and cresol CH3 in the para position. So this will be O cresol. This will be M cresol. This will be P cresol. Now there are some dihydric phenols. Dihydric phenols. So when there are two OH group and they are in ortho position, this is known as catechol. When you have two OH in the meta position, this is known as resorcinol. When you have two OH groups in the para position, this is known as quinol. And it also has another name that is known as hydroquinone. Hydroquinone. You just write these things. कभी ऐसे एक मतलब बहुत रेयर सवाल आते, लेकिन अगर आ जाए ना तो बहुत अफसोस होता है इस में. They will just write what is the structure of O cresol, है ना. और अगर आपने बस एक बार देख भी लिया तो थोड़ा सा तो ध्यान रखने के चांसेस ज्यादा है. आई विल नॉट से दैट आप बैठ के इसको रटिए, बट हाँ इट शुड बी प्रेजेंट इन द नोट्स. और जब भी आप नोटबुक खोले अल्कोहल चैप्टर के लिए तो इस पे एक बार रीड कर लेंगे, दैट्स इट. ठीक है, बहुत ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट दे शुड बी प्रेजेंट इन द नोट्स एंड यू शुड बी रिवाइजिंग व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग अल्कोहल चैप्टर. Raise your hand, Sudan. Waiting for Mir. After this, you will write method of preparation of alcohol. Now, the first method of preparation is from alkenes. Please write number one. From alkenes. Now, if we are going to take a propene, that is an unsymmetrical alkene. So there are two ways of preparing alcohol. If I treat this with water in the presence of acid, water in the presence of acid, then we get OH in the carbon with less number of hydrogen, more substituted. That is via Markovnikov rule. Markovnikov's rule से आपको क्या मिलेगा? Markovnikov addition या Markovnikov rule बोलते हैं इसको. You will get OH in the second carbon atom, that is more substituted, है ना, higher degree वाला. दूसरा है, if you treat this first of all with B2H6, that is known as diborane, and second step में you use hydrogen peroxide in the presence of NaOH or KOH. That means you need just a base, and you will get
OH on the first carbon atom, less substituted carbon atom, less degree वाला. And this is known as anti-Markovnikov rule के हिसाब से. Anti-Markovnikov rule के हिसाब से यहाँ पे addition होता है. So as you can see, in the double bond that we are having, this red carbon atom, it has only one hydrogen. And let's suppose if this is the blue carbon atom, this has two hydrogen. So when the negative part of the reagent attaches on the carbon with less hydrogen, तो Markovnikov addition या Markovnikov rule के हिसाब से addition बोलते हैं. When it attaches on the carbon with more hydrogens, तो उसको anti Markovnikov से बोलते हैं. I hope थोड़ा याद आया हो. हैलो अल्कीन में भी हम लोगों ने ये चीज की थी, राइट? कैसे नो? Alkene plus HX in the presence of peroxide and the absence of peroxide. याद आया कि नहीं याद आया? नोट्स रिवाइज कीजिएगा अगर याद नहीं आया तो. यू नीड टू आइडेंटिफाई द डबल बॉन्ड. उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐसे लिखिएगा. और अगर H2O है तो अगर H2O एन एसिड है तो जहां कम हाइड्रोजन है वहां पे OH अटैच कीजिएगा. और अगर B2SX और H2O2 है तो जहां पे ज्यादा OH है वहां पे अटैच कीजिएगा. ठीक है, दैट्स इट. आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चंस नाउ. मेक सेंस? ये सुनो में गाइस. क्या करना है समझ में आया? Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, असलान, यूसुफ, थोड़ा बोलिए. yes, पहला स्टेप क्या सबसे पहले क्या करेंगे बताइए. सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो भाई. सबसे पहले क्या करेंगे? यू विल आइडेंटिफाई द कार्बन विथ डबल बॉन्ड. जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है उसमें ऐसे ऐसे सर्किल कर दीजिएगा. देन फॉर ईच ऑफ दोज कार्बन यू काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है. और अगर आपको रिएजेंट में H2N एसिड दिया है तो जहां कम हाइड्रोजन है वहां पे OH लगा दीजिएगा. डबल बॉन्ड हटा दीजिएगा, याद रखिए. ठीक है, यू हैव टू रिमूव द डबल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है. ओके. और कुछ अपनी तरफ से दिमाग प्लीज मत लगाइएगा. आइडेंटिफाई द कार्बन विच आर हैविंग डबल बॉन्ड. उन दोनों कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखिएगा. विल राइट नंबर ऑफ हाइड्रोजन. एंड अच्छा, दूसरी चीज, डू यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ हाइड्रोजन? यू गाइस नो हाउ टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ हाइड्रोजन? टेल मी. अरे हाँ यार, कुछ तो बोलो. डू यू नो रेड कार्बन में एक हाइड्रोजन कैसे लिखा हमने? अरे कुछ नहीं पता. अरे हाँ यार, कुछ तो बताओ. डू यू नो हाउ? अरे भाई, तो बड़ा मुश्किल है यार तुम लोग इसको पढ़ाना इस तरह से. तो बताओ हाँ है ना. यूसुफ, अरसलान, कृष्ण प्रिया एंड मीर. डू यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन अ पर्टिकुलर कार्बन? Yes, sir. no, yes, sir, I'm not completely sure, sir, कि टेल क्यों है. क्या. ठीक, अच्छा ठीक. मतलब कुछ आइडिया है आपको? हाँ, कुछ आइडिया है सर. हाँ, जैसे बताइए. यस सर, हाइड्रोजन्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है ना, कार्बन बॉन्ड से रिलेटेड है ना. जितने हाँ. बॉन्ड कार्बन ने बनाया है, हम्म. कार्बन से 4 बॉन्ड्स बना सकता है. और अगर हम्म. सारे बॉन्ड्स ऑक्यूपाइड हैं तो जो बॉन्ड्स छुटे हुए हैं वही हाइड्रोजन बॉन्ड्स हम्म. वहाँ ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, तो जैसे रेड वाले में आपको कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं? कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं? सर, एक डबल बॉन्ड बनाया गया है और एक और सिंगल. कार्बन के साथ बनाया गया है, तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री है. समझ और में आ रहा है ना, इसलिए एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा. यस है सर. ना? ठीक है, दैट्स इट. ओके यू हैव सर, टू ओके. सी. बेसिकली थोड़ा फॉर्मूला लिखाते हैं बट जरूरत नहीं है. अगर हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द विजिबल बॉन्ड, फोर माइनस विजिबल बॉन्ड, फोर माइनस विजिबल बॉन्ड्स. ठीक है, तो ये एक विजिबल बॉन्ड, दो और तीन विजिबल बॉन्ड्स है. फोर माइनस थ्री क्या हो जाएगा? वन. वन फॉर दिस ब्लू कार्बन सिर्फ दो ही बॉन्ड विजिबल है ना इससे निकलते हुए. सो इट विल बी फोर माइनस टू, दैट इज इक्वल टू टू. ठीक है, सेम थिंग. जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर है. नो प्रॉब्लम. ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट्स प्लीज, राइट.
चलिए चलिए, एक और कर लीजिए। You will send the answers on my WhatsApp. Please remember to remove the double bond. अच्छा, हो रहा है या should I do one for you guys? So do the हाँ, first tell me. one. So just do the first one. फर्स्ट वन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा, यू आइडेंटिफाई द कार्बन एटम्स। यहाँ पे ना जिसको डबल बॉन्ड है, एक ये कर लिया आपने आइडेंटिफाई, और दूसरा ये है आपके पास। फाइन। अब टेल मी फॉर द रेड कार्बन, हाउ मेनी हाइड्रोजन इन द रेड कार्बन? Sir, 0. जीरो। एंड व्हाट अबाउट द ब्लू कार्बन? Sir, 1. वन हाइड्रोजन। ठीक है। अब बताइए, नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, यू विल मेक एवरीथिंग एज इट इज एक्सेप्ट द डबल बॉन्ड। ठीक है। नाउ यू हैव टू चूज, रेड कार्बन पे OH लगेगा या ब्लू कार्बन? टेल मी व्हाट डू यू थिंक? Markovnikov addition. OH will attach on the carbon with The least number of least number of hydrogen. हाइड्रोजन। तो क्या रेड वाले में है ना? Yes, sir. ठीक है, तो रेड वाले में OH लगा दीजिए बस। दैट्स इट। Okay, sir. जहां सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो वहां किसी में भी लगा दीजिए, यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है।
Yes, Krishna Priya, first one is correct, second one is fine. Third one, is also good. Fourth one is fine. Yep, fifth one is also correct. Very good. Makes sense, Krishna Priya? No problem. Yes, sir. Okay. Arsalan and Mir waiting for you guys. Yes, sir. Yes, sir. Yep, correct. Here, guys. So here, since both of these carbons are same, तो आप कहीं पे भी OH लगा दीजिए. Here we have B2H6. Here we have 0 hydrogen. Here we have 1 hydrogen. So in B2H6, it will go to the carbon which is having more number of hydrogens. So everything as it is, then you will add the OH. In H2O, less number of hydrogen. Here we have 0 hydrogen. Here we have 1 hydrogen. So everything as it is except the double bond. CH3 भी ऐसे लिखिएगा और OH लगेगा यहाँ पे. Here we have 1 hydrogen. Here we have 2 hydrogens. So here you will add the OH. ठीक है. Now, moving on. Next, you need to see the mechanism for the reaction. ठीक है. H2O वाला mechanism ही आपके लिए important है. You have to see the mechanism for the H2O case. ठीक है. Please write mechanism for hydration of. I am doing for propene बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि प्रोटीन में जो मतलब इन द मैकेनिज्म यू विल सी व्हाई द मेजर प्रोडक्ट आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड है. ठीक है. और फिर होमवर्क में आपको अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ईथीन के लिए करना है. ठीक है. तो ईथीन में आपके पास कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है. सो प्लीज राइट फॉर प्रोटीन यू सॉ दैट प्लस H2O in the presence of H plus. This is my major product. OH यहाँ पे लगेगा.
और एक माइनर प्रोडक्ट मिलेगा आपको, हियर यू विल हैव OH, ठीक है, बोथ द प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट बट दिस विल बी मेजर इन हाई अमाउंट एंड दिस विल बी माइनर। तो जनरली जब मेजर और माइनर की बात आती है तो अप्रोक्सीमेटली आप 80% समझिए, ऐसा नहीं कि 55 और 45% में मेजर और माइनर लिखते हैं लोग। वी हैव 80 to 90% ऑफ अ प्रोडक्ट, देन ओनली इट इज कॉल्ड मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म, प्लीज राइट, we have the protonation of alkene. This is the most important step, protonation of alkene. Now, we know that alkene is having a double bond, so this is electron rich site, and from the acid we will have H plus, which is electron poor. So the alkene, it is going to give electron density to the hydrogen atom. तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास दो तरह के कार्बन एटम्स, हियर वी हैव अ ब्लू कार्बन, लेट अस नेम इट A, एंड देन हियर वी हैव अनदर कार्बन एटम, लेट अस नेम इट, इसको हम एक काम करते हैं, वेट अ सेकंड, डोंट राइट अगेन, इसको हम ऐसे लिख देते हैं CH3 bonded to CH, doubly bonded to CH2. So let us suppose this is A carbon and this is the B carbon. Now when the double bond attacks on the hydrogen, the H plus ion, the proton, then there are two things which can happen, or rather there are two things which happen exactly. There are दो चीज होती है. There are certain molecules of propene जिसमें A को हाइड्रोजन मिल जाता है और कुछ होते हैं जिसमें B को हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है. So please see, if I am going towards the blue pathway, ठीक है, blue pathway मतलब A वाले कार्बन को अगर मिल रहा है, then what will happen? We'll have CH3, then this CH will become CH2 because hydrogen is going to the A carbon, और CH2 वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा, right? CH2 will be CH2 positive. If I am going through the red pathway, then what will happen? The CH3 will be as it is, nothing is happening there. Then the CH will be as it is because hydrogen is not getting attached to the blue carbon atom, A carbon, और उसके बाद आपके पास हो जाएगा CH3. Now this CH will have a positive charge. As you can see, this is a 1 degree carbocation, and it will be less stable. And this is a 2 degree carbocation. Therefore, it will be more stable. Now, if this is more stable, then obviously बात है, the reaction will further proceed through the second degree carbocation, है ना. जो ज्यादा stable है तो obviously ये red वाला pathway faster होगा, it will be, this reaction will be happening faster, the rate of the red pathway will be faster, and that is why this product will be, this intermediate will be majorly formed. Second step में the attack of H2O. So I am going to take the 2 degree carbocation. So you have CH3 bonded to CH, the positive charge, then bonded to CH3 plus H2O. Now H2O, it has lone pair electrons, so it will attack on the carbon which is having positive charge. So this is a nucleophilic attack हो रहा है यहाँ पे. So we have CH3 bonded to CH, bonded to CH3. Now whenever there is an attack, there is a bond formation. तो bond किसके बीच में बना? You have H2O and the carbon bond is formed like this. Now you can see that oxygen is having 3 bonds. That is why it will get a positive charge. Now this is just a formal positive charge. It does not mean there is any less number of electron present. ठीक है. Third में, it is deprotonation. In deprotonation, what happens? You have CH3, CH, CH3. Then we have oxygen with the 2 hydrogens as it is. Now the oxygen is having a positive charge. So you can imagine that since oxygen is more electronegative, it will be pulling electrons from the hydrogen atoms, and it is having positive charge. Or intensely, it will be pulling electrons from the hydrogen atom, making the hydrogens very delta positive, highly delta positive. तो फिर क्या होगा? Another alkene will attack. जैसे alkene यहाँ पे H plus पे अटैक कर रहा है, so alkene will then attack this hydrogen atom. तो वो अटैक दिखाया नहीं गया आपके टेक्स्ट बुक में. What you will write? You will just write that this hydrogen gives the electron density to the positive charge on oxygen and neutralize it, और आपको प्रोडक्ट मिलता है CH3 bonded to CH, bonded to CH3, and then here you get OH plus the H plus.
Now this also shows that H plus is only used as a catalyst. H plus जो first step में use हुआ था, it is being given out. ठीक है, तो H plus का जो एसिड का इस्तेमाल है यहाँ पे, that is only as a catalyst. ठीक है, चलिए please write these 3 steps. Let me know once you are done. I'm waiting for Mir. Mir, please raise your hand once you're done. यहाँ पे नोट लिख दीजिएगा. In hydration of alkene, only ethene gives 1 degree alcohol. All other alkenes would give either 2 degree or 3 degree alcohol as major product. Give me a second. एक तो आपके पास सवाल आएगा इस तरह का, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, दूसरा आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा. सी, हाउ वुड यू synthesize the following alcohols from appropriate alkenes? So the reaction that you will always do is hydration of alkene. आप B2H6 वाला डाइबोरिन वाला रिएक्शन नहीं करेंगे. Why? Because डाइबोरिन इज एक्सपेंसिव, वाटर बहुत ही ज्यादा आसानी से आपको मिल जाता है. ठीक है, सो देखिए, इसको बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस. एक होता है सिंथेसिस इन विच यू हैव टू मेक द प्रोडक्ट. Retro means backwards. So retrosynthesis means you have been given the product. You have to tell me what should be the starting material. बस समझ में आ रही है? सुनो प्लीज टेल मी. अरे भाई ना तो बोल दो. Yes, sir. ठीक है, सो सी, इफ यू हैव बीन गिवन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए आप ये एरो यूज करते हैं. ठीक है, और अगर आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है तो स्टार्टिंग मटेरियल के लिए आप ये एरो यूज करते हैं. बात समझ में आ गई? दिस एरो से आप क्या बताइएगा? स्टार्टिंग मटेरियल बताइएगा सिर्फ, है ना. यू डोंट हैव टू गिव द रिएजेंट आल्सो, जस्ट गिव द स्टार्टिंग मटेरियल. सो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन? देखिए क्या करना है आपको.
यू आइडेंटिफाई द अल्फा कार्बन। कर लिया आइडेंटिफाई इसोनोफिशियल में गाइस? अरे हाँ या ना तो बोल दे। Yeah. ठीक है, अब उसके बाद आपको करना है बीटा कार्बन की डिग्री का। तो आपके पास देखिए ये एक बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री। इस बीटा कार्बन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री। और इस बीटा कार्बन की डिग्री क्या है? दिस इज 1 डिग्री। बात समझ में आ रही है इसोनोफिशियल में? Yes, sir. ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, देखिए अगर आपके पास ना इस तरह से 2 डिग्री वाले दो हैं, 2 डिग्री वाले दो हैं और इधर 1 डिग्री, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे 1 डिग्री है ना, तो आप जो कम डिग्री वाला है उसके साथ डबल बॉन्ड कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, फॉर द फर्स्ट केस you have like this CH3 here and OH here. You'll identify that this is 2 degree, this is also 2 degree, this is 1 degree. So the alkene that you are going to use would look something like this. डबल बॉन्ड, अब CH3 हो गया तो CH3 से क्या हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, now if you are going to add H2O and H plus, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि here we have 2 hydrogens, here we have 0 hydrogens, तो ऑब्वियसली किस पे लगेगा, 0 हाइड्रोजन वाले पे लगेगा, and this would become CH3. मेक सेंस? ये सुनो प्लीज टेल मी, बात समझ में आ रही है? हाँ जी Yes, गाइस, sir. ठीक है। अब देखिए इस वाले में क्या करना है आपको, यू विल आइडेंटिफाई द अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर बीटा देख लीजिए। बीटा में आपके पास दिस इज 2 डिग्री, दिस इज ऑल्सो, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, 2 डिग्री दोनों है, और ये वाला क्या है, 1 डिग्री। ठीक है, सो फॉर दिस द एल्कीन दैट यू विल हैव इज 1 2 3 4, 7 है, डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही है सोनो प्लीज टेल मी गाइस? Yes, sir. ठीक है, व्हाट अबाउट हियर, यहाँ पे आपके पास दिस इज दी अल्फा कार्बन, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, द एल्कीन दैट यू कैन हैव इज दिस एल्कीन। देखिए दोनों हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप 2 डिग्री में भी कर दिए ना, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं हो जाएगी, बट आई एम जस्ट सेइंग प्रेफर क्या करना है आपको। अब यहाँ पे आप देखिए हियर यू हैव 3 डिग्री। ठीक है, दिस इज योर अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 डिग्री में ही कीजिए सर। The alkene that you can have is CH2 like this। ये alkene आपको देगा। अगर आप 3 डिग्री के साथ कर देते ना तब तो दिक्कत हो जाती, 3 डिग्री के साथ अगर करते हैं तो आपको OH यहाँ पे मिल जाता। ठीक है, तो वहां पे आप नहीं रख सकते। यू अंडरस्टूड ना व्हाट्स द कंसेप्ट हियर? सुनो कृष्ण प्रिया, मीर एंड अरसलान, Yes, sir. Yes, sir. प्लीज राइट इट डाउन। रेज योर हैंड वंस यू आर डन। जस्ट वेटिंग फॉर कृष्ण प्रिया। Next, the second method of preparation is from carbonyls. Please write number 2. How is writing alcohols? Alcohols number 1, blue से। नंबर 2 लिखिएगा,
from carbonyl compounds. कार्बोनिल कंपाउंड्स के बाद इसमें पहला जो तरीका है दैट इज बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज reduction of aldehyde and ketones, aldehyde और ketones के reduction से. So please see, we have carbon double bond O. There will be some groups attached here. When you attack or treat it with reducing agent, actually में क्या होता है? You have hydrogens. One hydrogen will attach on the carbon और एक हाइड्रोजन किस में अटैच हो जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर. So what you will get? कार्बन, एक तो हाइड्रोजन लग गया इस पे, the two groups are as it is और सिंगल बॉन्ड होके यहाँ पे OH आ गया. ठीक है. So there are a few things which are happening. बॉन्ड यहाँ पे पहले टूट कौन सा है वो देखिए. अरे वो देखिए आप लोग, what bond is breaking? The C double bond O is breaking. तो pi bond it breaks and ये डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए. और कौन से बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं? CH बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड? The OH bond. Both of these bond are getting formed. Fine. Now this is in general for aldehyde and ketone. Now if you see, if I am going to take an aldehyde, you have R which is bonded to carbon atom, which is bonded to carbon atom like this, and then you have hydrogen. This carbon has a double bond 2. अगर हमने कोई भी reducing agent डाला है यहाँ पे, so you can see that what is going to happen, you will have R as it is, then the carbon atom will get a hydrogen, और एक हाइड्रोजन पहले से इसके पास है, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, और डबल बॉन्ड O क्या बन जाएगा आपके पास? OH बन जाएगा. So as you can see, CH2OH, this is what 1 degree alcohol. Now next case is if you are having R which is bonded to carbon, which is having a double bond O, and then another alkyl group like this. If you have any reducing agent, then what will happen? You will have R which is bonded to carbon, which will get a hydrogen, and this R will be as it is. But this carbon which is bonded to oxygen with a double bond, it will have a single bond, and oxygen will get OH. So CHOH, you can see that this is 2 degree alcohol. तो जो aldehyde है आपके पास, aldehyde it is going to give you 1 degree alcohol, and the ketone is going to give you 2 degree alcohol. याद रहेगा ये सुनो प्लीज गाइस. Yes, sir. इसको लिखिए and then please write with me. Aldehydes and ketones can be easily converted to 1 degree and 2 degree alcohol respectively using reducing agents such as the most basic one is reduction के लिए H2 चाहिए आपको. So you will have H2 in the presence of either nickel or palladium. ऐसे लिख लीजिए आप, और करके लिख लीजिए आपको, फिर डिफिकल्ट. निकल और पलेडियम और प्लैटिनम. ठीक है, इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं. राइट. दिस इज ऑल्सो नोन एज AKA कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन का मतलब H2 को ऐड करना. कैटालिटिक मींस यू आर यूजिंग अ कैटलिस्ट सच एज निकल, PD or PT. The second one, it is a very important reducing agent that is known as lithium aluminium hydride. This is lithium aluminium hydride. The third one is sodium borohydride, NaBH4. Sodium borohydride, boron hydride. The fourth one is sodium in ethanol. So in the reaction, you will see it like this.
एरो के ऊपर ऐसे होगा सोडियम, और इधर होगा C2H5OH, नहीं, या ETOH कुछ भी हो सकता है। बस जो सी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल रिमेन सेम, ठीक है ना, इसको बस ध्यान रखना है आपको। एल्डिहाइड और कीटोन में नंबर ऑफ कार्बन एटम विल रिमेन सेम। नो सर। देखिए पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए CHO, we have H2 in the presence of nickel, ठीक है। सीम्स, कैसा लग रहा है, सही सही आंसर है, बताइए। मीर अरसलान ने पेश कर दिया, फाइन, समझ में आ रहा है। देखिए बताइए जरा। Yes, sir. Yes. नहीं, गलत है। क्या गलत है बताइए। दिस वन इज रॉन्ग, टेल मी व्हाट्स रॉन्ग हियर। यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट्स रॉन्ग हियर। I think one carbon is missing. Yep, correct. ठीक है, but initially it looks fine, right? And this is one of the mistake that you can also do, because CHO is here, you tend to write the OH here, but the thing that you have to remember is the number of carbon atom will remain same. So here we have three carbon atoms. So first of all, you will make the three carbon atoms, 1, 2, 3, and then you will add the OH on the carbon which was previously aldehyde. Got it, Arsalan? Yes, sir. ठीक है, but you will not have similar difficulty or similar confusion for the ketone case. For example, if you have ketone something like this, and let us suppose you have lithium aluminium hydride, then I hope you can see the product is very easy, that you will get a 2-degree alcohol. Make sense? Yes or no, please tell me. Yes, sir. ठीक है, चलिए, please write a few questions. Once you make the product, just count the number of carbon atoms in reactant and product, to make yourself sure, especially in the cases of aldehyde. Guys, one more minute and you will send the answer whatever you have done. कृष्ण पे आपने भेजा है क्या?
No, sir. Okay. Take 1 more minute. Guys, 1 minute is over. Yes, Krishna Priya, third one is fine, fourth one is fine, fifth one is also fine. Guys, can you please send the answers quickly? The fourth one is not right, Arslan. See what's the mistake in the fourth one? Yes, sir. You got it? Others are fine. Did you get the mistake, Arslan? No, sir. Not completely sure why. Count the number of carbon atoms. Okay, sir. Okay, sir. Got it?